So hello and good evening, everybody. Welcome to Lamakan. This event was, have been contemplating for very little time. I think this was like Medusa said that it was impromptu in nature. So we have to literally rope in her, and there you are. She's here, and she's going to talk today evening on a very interesting topic. You must have heard of humor and satire; they go together, and satire particularly has this social commentary and critique, and which is the need of the hour in the 2025, and particularly in India. That's why she is here. So I'll take a half a second to introduce her quickly. So I have all the privilege to introduce to you Dr. Medusa. She's a satirist with her work primarily on Twitter. She comments on current political scenarios and issues, including, but not limited to, feminism and any form of discrimination based on caste, class, religion, using dark humor and satire. Her work mainly began during the first lockdown while witnessing the aftermath of the government's incompetence, which is a bigger virus than COVID, any given day. So she uses three main formats to voice her thoughts. The first one is the neighborhood teacher who uses English language teaching as a tool to covertly teach dissent. And then the second one is a very interesting title. I like the title. It's called Dug Darshan. We have grown up watching Doordarshan, but we will be able to, watch Dug Darshan, a new show that covers today's events, but in the 90s style, particularly. And NTPC helpline, the call center that disseminates the BJP IT cell toolkit to normalize subscribers. So Dr. Medusa is also a proud, alumna of JNU. So please join me in hand together to welcome Dr. Medusa to deliver the lecture, The Relevance of Satire in 2025 India. The Deccan is different. Dravidian languages are, it is a completely language isolate family. They have no connection with the other language families in the country. We also, Marathi is Indo-Aryan. Marathi is Indo-Aryan. Dravidian में Telugu, Tamil, Tulu, Malayalam, these languages are Dravidian. Kannada also, Malayalam, Dravidian languages. We have the Andamanese language family, which is in the Andaman and Nicobar Islands. We have Austro-Asiatic language family in the northeast, where a few tribal languages called Ao, Angami, and Khasi, Dravidian language. We also have the Tibeto-Burman language family. Tibeto-Burman mein we have Meiteilon, which is Manipuri, but Meiteilon is the name of the language. And other Tibeto-Burman languages, some of the Uttarakhand ka languages are also Tibeto-Burman, like the communities, jo pahadi communities hain, Raji वगैरह बोलती है, those are Tibeto-Burman language. Jad is Tibeto-Burman language. Kumaoni is, however, Indo-Aryan. Bhojpuri, Magadhi, Magahi. These are, by the way older languages than Hindi, because there is this tendency of calling these languages as upabhasha of Hindi language, but Hindi is a newer language. The development of Hindi happened in the last 150 years, not even younger than 150 years. Avadhi, Magahi, Maithili, all of them are way older than Khadi Boli Hindi. Khadi Boli Hindi is a very artificial and kritrim language, which only started coming into the common parlance before, during and after the independence struggle, our independence struggle. क्योंकि उस टाइम पे हिंदी को काफ़ी, because publication वगैरह भी हिंदी में होते थे देवनागरी स्क्रिप्ट की वजह से, and publication की वजह से, and बहुत सारे magazines वगैरह निकलती थी. उर्दू में primarily था, but after that later on when the script नागरी प्रचारिणी समिति and हिंदी प्रचारिणी समिति, all of these organizations pushed the language. तो उस समय में there is a lot of contribution. There is a completely different structure altogether. It's a completely different lecture altogether. उससे पहले भी था. Yes, sir. I'm done. Like, if you कहाँ पे? Language में Tibeto-Burman languages are there. Tibeto-Burman तो वहीं से ये है ना, languages. No. Linguistically speaking, they're completely. It's a different family altogether.
Sino-Tibetan is there, Tibeto-Burman is there, and जो South Asian languages हैं जिसमें Chinese, Mandarin, Cantonese वगैरह आते हैं, they're completely different language family. उनका language families अलग है. Bhutanese, वो तो Tibeto-Burman language है. Yeah. Anybody has any questions or? Yep. Any comments, any questions, anything, any material that you want to give me? Because I love new material for my satire. IT cells organized where? लो आई टोल्ड यू नो आईटी सेल में मुझे पक्का लगता है कंपटीशन चलता है कि सबसे घटिया आंसर इसका क्या हो सकता है, सबसे बेहुदा, और उसको मिलेगा आज का घर जाने का पेट्रोल 2 रुपए एक्स्ट्रा. तो वही सिस्टम है. दे आर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. यस. Hi, Dr. Medusa. Hi. Thank you so much for coming to Hyderabad and instilling so much. Completely energy. my pleasure. Yeah, because I never thought that I could openly, address my disappointment in the current government that's governing India as a whole, and it hurts me to the core. What I want to understand is that very, very less, like very, very minute percentage of us Indians are against the nationalist, agenda. We don't want to follow that. So just like how you've started going public about your observations and your sense of, reality, do you think people like us, can also start voicing our opinions, online, that what we are seeing is not the reality, this is what it is? And how safe are you? Do you not want Z security? Do you not want any FIR stating that agar mujhe kuch ho gaya, then it's the BJP or someone from the BJP's, umbrella of people that support BJP. Like I can't openly talk about mujhe beef khana hai from the part of Hyderabad where I come from. High Tech City is full of people who support them. So when I come to Banjara Hills or go towards Charminar, that's when I can openly have beef. And I'm so sorry if I'm, hurting anybody's sentiments over here, but that is something that No, we don't should be have sorry. the भाड़ में freedom- जाए sentiments क्या है? freedom. So yeah, how safe do you feel that Anbhakt and Dhruv Rati, people like, I mean, obviously you are also on that level. नहीं, How नहीं, safe ऐसा do you how safe do you feel being anti-nationalist? हाँ हाँ हाँ. And is तो हम there लोग को भी तो उसको जर्मन शेफर्ड बोला था. मैं भी मेरा दिस इज माय नो दिस इज माय वर्ड. ओके, सो लाइक इफ यू एवर हियर इट एनीवेयर, जस्ट नो दैट आई एम द वन हु कॉइंड इट. आई कॉल एनीबडी हु इज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी भजपिल्ले. ठीक है. सो मैं जानता हूँ भजपिल. आई डिड इट, एंड इफ यू हियर इट एनीवेयर इट्स आई डिड भजपिल्ले. ओके, सो बोलना कि डॉक्टर मेडुसा ने पहली बार बोला था. एनीवे, तो इट पीपल इट पिक्ड इट अप. एज फार एज बीइंग स्कैर्ड इज, मेरा क्या ना, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इररिवेरेंट इन नेचर. लाइक फर्क नहीं पड़ता. आई हैव द ओनली पर्सन दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ इज माई मदर. अदर देन दैट वो भी उसके अलावा मेरे को also, but then I am very acutely aware of the privilege that I have. First of all, I am my privilege through marriage, because I live in UP. I'm married to a Thakur, so Thakur supremacy. I know for a fact almost all my family, like from my husband's side, other than my husband, almost all of them are supporters of the BJP and of the particular year. They know the kind of work that I do, but this idea of Thakur and Thakur Bahu is so much that I know that I am protected from that angle. So that I am very aware of that privilege. Secondly, English speaking. And वो भी क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, अगर कुछ कभी कभी आपको कोई अंधभक्त से टकरा भी जाए, उसके सामने आप अच्छे से अंग्रेजी में डांट दो तो उसको वैसे ही उसकी परेशानी उसकी खत्म हो जाती है. नहीं भैया क्या बोल दिया समझ में नहीं आ रहा. तो दूसरा, so I am very aware of the privilege. I won't say that I'm scared. I'm not scared. I am very much. I have a family. Thankfully, I don't have children. तो उस वजह से उसका टेंशन नहीं है कि मैं चली जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा टाइप से. I have 3 dogs. I am worried about them. But anyway, वो चलो पल जाएंगे. But then the thing is, I also know that if I am not killed and only arrested, तो अरेस्ट अगर कर लेंगे तो निकल के विधाई की खेलूंगी मैं. निकल के आई विल बी
विधायक विधायकी लड़ेंगे और फिर विधायकी जीतेंगे और फिर उसके बाद हमारा दबदबा. So I have it's contingency plan. But jokes aside, it's not that I'm not scared. I definitely am. But I have mental health issues if I'm not speaking. So I have to. So it's like a very personal thing for me. और मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा. And I really hope that people talk, more people should talk and more people do talk. I want that to happen, but I cannot in any good faith ask anyone or tell anyone how to protest. I cannot do that, because even if it's the members of the Muslim community who are currently in the worst possible position that they can be in, I cannot tell them what to do for their survival. They have to do it. My role and my responsibility as a member of the majority is that I have to protest for them. That's my job. I'll do that. If they are not willing to, or if they cannot, if they are scared, if they are उनकी जान पे बनी आई है, मैं नहीं कह सकती ना उनको. नौकरियां चली जाएगी, वो अपना घर पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं. I cannot in any good faith. I have so much privilege. I can use that privilege for their benefit. If somebody wants to do that with me, they're absolutely welcome. If I'm not welcome, कोई बात नहीं. मुझे अपना काम करना है, मैं वो करूँगी. I hope more people are able to do that. That's just it. Thank you so much. Thank you. How do you draw this very thin line between, satire and also legally accepted some kind of repercussions? They can also book you into it. So how do you I don't meddle with it? actually. I don't actually. Sometimes I use words like Uttam Pradesh for Uttar Pradesh, like to save myself. Narendra Modi to Fakendra Modi, things like that. And then I think I call Amit Shah Tadipar all the time. Like Tadipar, हमारे गृह मंत्री Tadipar. He is a Tadipar. हाँ, वो तो है ही, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. But I don't think I am big enough or important enough to be in their radar anymore. So that is giving me a little bit of ये, क्योंकि ध्रुव जैसे लोगों पे तो आए दिन FIR होते रहते हैं. मेरे पे फिलहाल अभी तक एक ही मेरा खाता खुल चुका है, मेरे पे एक केस है. So मेरा खाता खुल चुका है. हाँ, अभी कुछ महीनों पहले ANI ने केस किया था मेरे ऊपर. ANI की वो स्मिता प्रकाश को मैंने थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया था. Was very lot of fun though. तो उसको कुछ बोल दिया था मैंने, तो उसने केस कर दिया था मेरे पे. मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया. तो आई एम लाइक भाड़ में जाए, मेरे को कौन सा यूट्यूब पैसा दे रहा था. तो अभी तो और अच्छा है, डिमोनेटाइज का और गाली देंगे. उससे पहले तो मोनेटाइजेशन के चक्कर में थोड़ा कम देते थे. वो दैट्स ऑल्सो अनदर प्रिविलेज. नो, आई हैव अ सरकारी नौकरी एंड माई सैलरी कम्स एट पहली तारीख को कुछ भी हो जाए टाइप से. और सरकारी नौकरी में कम से कम आज तक ये है कि सरकारी नौकरी में घुसना जितना मुश्किल है, निकलना उससे ज़्यादा मुश्किल है. निकालना हो तुमको और ज़्यादा मुश्किल है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ माई प्रिविलेज. So the university officials would not trouble you? They haven't still, because अभी तक तो फिलहाल क्या है ना कि एक तो जबान बहुत चलती है मेरी. तो यूजुअली ऐसे मतलब बेइज्जत हो जाते हैं ना लोग टाइप से. जैसे वो जो उर्दू वाला बंदा था, उसको मैंने उससे ज़्यादा उर्दू सिखा दी, हिंदी सिखा दी. तो इसीलिए यूजुअली पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, दे आर लाइक, हाँ मैडम, आपका वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे. देयर वाज दिस वन वीडियो व्हिच आई मेड अबाउट कास्ट एंड रिजर्वेशन एंड स्पेसिफिकली ऑन इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से कास्ट एंड रिजर्वेशन को गाली दी जाती है एंड बोला जाता है. फॉर एग्जांपल SC पोजीशंस हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भरी नहीं जाती है, NFS कर दिए जाते हैं SC OBC पोजीशंस. ये बहुत कॉमन है, यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन. उस पर मैंने लिखा था, तो यूनिवर्सिटी के ही एक टीचर ने मुझे बोला था कि अरे आपका वीडियो देखा मैंने आज, बहुत अच्छा था. मैंने कहा अच्छा तो लगा नहीं होगा आपको, ऐसे ही बोल रहे हैं. एंड सो आई से दिस वेरी ओपनली इन फ्रंट ऑफ देम. आपको कैसे अच्छा लग गया द्विवेदी जी? हो नहीं सकता, बताइए. तो हाँ, तो इट्स लाइक यूजुअली द वे आई यूज लैंग्वेज. तो इसीलिए तो थोड़ा सा वो लोग घबराते भी है. तो इंस्टीट्यूशनली अभी तक फिलहाल, बट हाँ, इंस्टीट्यूशनली इस तरीके से पैसिव एग्रेसिव चीज़ें होती है, जैसे छुट्टी नहीं देना. For example, for today's event also, like today and tomorrow, I had to go and fight to get the छुट्टी approved. So वो छुट्टी नहीं देंगे या फिर कैंसिल कर देंगे लास्ट मिनट में, so that पैसा वैसा का नुकसान हो जाए और ये हो जाए. तो करे क्या है बाद में.
Yeah, absolutely they can. और वैसे भी गवर्नर के यहाँ से एक बार एक आदेश आया तो था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे. देयर वाज अ ये, बट दैट डज नॉट अप्लाई टू यूनिवर्सिटी रूल्स बिकॉज वी आर एन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी. वी वर्क विथ द गवर्नमेंट. द गवर्नर हैज सम काइंड ऑफ क्वाजी जुडिशरी powers, but it's not the all in all. So the executive committee is the one which decides things in the university, so which is a good thing, I think. तो फिलहाल कुछ लोग तो चलिए हमारे एक दो लोग तो हैं ही, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दो आवाज़ें भी काफ़ी होती है. तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थिंक इट्स बेटर, इट्स गुड फिलहाल सो फार इंस्टीट्यूशनली. Hi. बट करेंगे भी तो, अगर मान लीजिए कुछ करते भी है तो वीडियो बना दूंगी कि ऐसा सबको पता चल जाएगा. So my question was, suppose when you're in your class, conducting your classes and all, if you encounter a student who is not passive aggressive but actively aggressive, saying something completely asinine and obnoxious to you on your face, how do you deal with that sudden rage that you feel at that time? I haven't encountered that as yet. क्योंकि अभी भी ना क्या है, वो गुरुजी प्रणाम वाले की वजह से गुरु शिष्य वाला जो है देयर इज उससे भी थोड़ा सा सेफ्टी हम लोगों को बनी रहती है, बिकॉज दे वोंट डायरेक्टली ये अटैक यू. बट देन अगेन in our university there has been an incident of a teacher being slapped by a student on the road because he quoted an author during the Gyanvapi mosque thingy. He quoted an author. It was not even a direct quote by him. He quoted an author who had written something very controversial in the eyes of the, of course, Akhand Bharat Brigade. So उनके नज़रों में वो था. तो ऐसे incidents हुए हैं, ऐसा नहीं है. But like I said, I am very aware of the privilege that I have in my university as an English speaking, as an upper caste married and a woman also, because there is, I don't want to say that it is safe. It's not, because अंधेरे में मिलूंगी तो मार ही डालेंगे, बट दिन के उजाले में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वो लोग डिस्टेंस रखते हैं. However, I have had passive aggressive kids. You will not believe, this is again another example of how it is impossible to write satire. I was talking about communication and how animal communication and so on and so on, and I was talking about how nature and the appearance of different things, and I was talking about how nature is extremely, there is no, you cannot humanize, or you cannot push your human emotions on nature. For example, in nature, if a mother, if there's a litter of or the offspring is weak, or the offspring is genetically deformed or malformed, the mother will either kill it, the mother will eat it, or abandon it. Okay? There is this, it's natural, it happens in nature. You cannot project human emotions of being a mother into the actual what happens in nature, right? So I was talking about this, and this one kid gets up and, no, गाय कभी ऐसा नहीं करती. गाय कभी अपने बच्चे को, first of all, the guy is a domesticated animal. The guy does not take care of the child. The human beings around it take care of the बछड़ा. ठीक है, तो ह्यूमन बींग ने तो उसका दूध भी नहीं छोड़ा बछड़े के लिए. बट देन द पॉइंट इज, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट. मैं एनिमल्स आकर इन नेचर, मैं बात कर रही हूँ लेपर्ड्स की, मकड़ी की, तुम गाय पे पहुंच गए. एंड ही ट्राइड जोड़ोइंग इट टू आवर कल्चर. नहीं, हमारे संस्कृति में मैं कहा भाई मेरे, गाय हर जगह है. किड्स 18, 19. And plus very malinformed, because I was remember when the first incident of Akhlaq happened, the mob lynching of Akhlaq happened, and I was talking about this incident in class, and I asked them, do you guys know what has happened to Akhlaq? And they're like, no, who Akhlaq? So that is the level of but then the very next year itself, I think it was 18 or 19. Then very next year itself there was WhatsApp forward का जो next batch था वो full on WhatsApp forward वाला batch था. So I've had ये, so aggressive अभी तक मुझको लगता है कि नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता भी है मान लो तो लड़ेंगे साथी. क्या है जितनी ताकत है उतना तो है, जितना है वही ना. यूपी है, गुंडे से बड़ा गुंडा बनना पड़ता है, और गुंडा ही थी हम में बहुत है भैया. बोर हो रहे हैं मुझे लग रहा है सब लोग. रुक जाओ, अभी हमने बात करी ना, लेट हिम से, अभी फिर हम बात करेंगे.
नहीं, मेरे पास एक जनरल आपकी राइटिंग प्रोसेस के लिए क्वेश्चन था। Sorry? राइटिंग प्रोसेस के लिए क्वेश्चन था। क्योंकि मैंने जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या सैटारिस्ट जो लिखते हैं और जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जिनकी बहुत रीच होती है, दे हैव दिस इंटरनल फिल्टर व्हाइल दे आर राइटिंग कि यार अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इसको क्लिप करके फिर दे विल यूज इट फॉर अदर थिंग्स। सो व्हाइल यू आर राइटिंग, डू यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इंटरनल फिल्टर Yeah. एंड लाइक हाउ I have no filter. The only filter which I have is for so-called abusive and cuss words because, and that's also, see, I am a linguist. As a linguist, I understand that cuss words and abusive words, these exist in our vocabulary and they exist, they have been formed through a legitimate linguistic process. It's the misogyny of them aside, but then I am from Assam, and Assam, mein we have cuss words including our mother, including our brothers and fathers also. So we are a very gender neutral cuss word language, okay, by the way. So we have that. But I don't think that's there in Hindi or any of the other languages which I've encountered. In Bihar, nice, good for you. You have to tell me some of them, okay? So but then the thing is, I am a teacher, so मुझे वो चीज़ और many of my students follow me. So that's the only kind of filter which I use. I do not use the F word. I do not use the other kinds of the so-called cuss words. But then I kind of use a lot of potty humor. Unfortunately, वो मुझे करना पड़ता है. And then I also create certain, sometimes I create, like, you know, the Shakespearean abuses, Shakespearean गाली वाला system, वो मैं निकाल लेती हूँ कभी कभी. And वो कभी लेकिन वो लोगों के ऊपर से उड़ जाता है. पर लाइक आई फील लाइक सैटायर एज ऐसा बहुत ऑडियंस को ना, इट लाइक for them it becomes a statement that you're making and they don't get the satire in it. Oh, they don't, sir. Oh, this one time I had one of my thingies how to avoid rape. This is something which I had written, how to avoid rape, and it was circulated by the BJP IT cell. As some, and the point is, every single one of them, I'll show you it. Every single thing, they didn't even read it. They didn't even like listen to it properly. कि क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है. बिकॉज उनको पता, क्योंकि सारे मेंस राइट्स वाले उधर उसी टाइम पे खड़े हो जाते हैं अगर उनको पता चलता तो. हाँ. Hi, I am Dr. Medusa. I am a feminist, and today I'll tell you my top 5 ways to avoid rape. Number 1, do not rape. Number 2, do not get drunk and rape. 60 to 80% of rape and sexual assault events involve alcohol usage by the rapist. Unfortunately, we don't have the exact data for India, so just to be on the safer side, do not go to a party or to a get together where there is alcohol and also women. You don't want to risk getting drunk and raping someone, so avoid alcohol and avoid rape. Number 3, do not get excited and rape. If you think women wearing revealing clothes excites you and causes you to rape, we recommend using blinders and braces. The neck braces will keep you from moving your head, and the blinders will keep you from looking at women wearing any kinds of clothes, and you will be also able to avoid rape. Number 4, do not go out at night and rape. If you often happen to be outside your house after sunset and see a woman waiting for a bus, walking on the road, returning from office, or simply existing and find yourself excited to rape her, make sure you are wearing this chastity belt. Being heavy and bulky, this will prevent you from moving too quickly, thereby helping the woman escape, and you can safely avoid raping her. Number 5, do not breed and rape. If you copulate with a woman, there are 50% chances of the child being born a girl. She will grow up to be a woman, which might cause you to rape. So stay inside your house, lock the door to your room from outside, and give the keys to a trustable person in your house, like your mother or your sister, so that you can stay in and avoid rape. Don't forget to follow me for more tips on how to avoid rape. This was circulated by the BJP IT cell. It had so many views. I'm like, कहाँ से आ रहे इतने views? And then I got to know it was in the BJP IT cell. They didn't even look at it. तो इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत के समय में शुरुआती वाला मैं थोड़ा सा इस तरीके का अगर बेट दिया करूंगी तो बीजेपी आईटी सेल वाले पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद उसको स्प्रेड कर देंगे. एटलीस्ट विल गो टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज्ड टू. I wanted to make a video on Philistine also with something like पता है इजराइल ने क्या किया, पता है इजराइल क्यों अमेजिंग है, ग्रेट है, and then maybe start that video and then Suresh Chawanke will air it on Sudarshan News. Yeah. I'm just looking at, there are two parts to my question. Between the languages that you use, between Hindi and English, when you are actually injecting humor and as well as sarcasm,
do you actually keep track of how many people actually are able to track it and understand it? No. Because I tell you, the reason being that invariably at one particular point, the quality of language as well as the content that you have will restrict you to actually to the intellectual class who are already aware of this particular story, rather than the ones who actually need to act upon it. Like what happened in your case, that was a very, very, very well thought through process in which the perpetuators were actually being made a party to first and foremost understand that what they should not do, Yeah. and then reach it out into their own network. But if those guys were capable enough to understand Yeah. what was written over there, they wouldn't have done what they were supposed to have done. So actually, So both it- the stories have come into the picture over here. So when I started doing my satire, no, it is a very very personal and very very selfish project. I started doing this and I still do this because it is very important for my mental health. Otherwise, मैं पागल हो जाऊंगी. So I do this for this has been told to me by a number of people who have been I'm very humbled by the attention that I have gotten from the who's who of at least this side of the Indian political scenario. Many of them have told me that कि थोड़ा सा अगर आप language को भी वो रखेंगी, इतना complicated नहीं होगा तो शायद ज़्यादा masses को समझ में आएगा. तो but then the thing is that's not why I started it. It's a confession, but I did not start it as a social process at all. It was completely a personal project to save myself from going mad. So because of that reason, so I don't I don't pull my punches or I don't simplify the language for it to be able to be enough to be understood. But like you said कि अगर जो intellectual class है उसको already पता है, I think उनको भी कई बारी बताने की ज़रूरत पड़ती है. Specifically because feminism is a topic which is very close to my heart and I'm learning my own brand of feminism, my own understanding of feminism changes every single day. With every new book I read and every new incident that happens. तो उसमें भी मैंने ये देखा है कि for example, I remember ये वाला जो अभी हाल ही में अतुल सुभाष वाला incident हुआ when this man committed suicide on camera and because of torture and so-called by his wife. उस टाइम पे there was so much of hue and cry by men's rights activists and I was of the opinion कि see any kind of sexual violence against men, any kind of sexual violence against trans people, any kind of sexual violence against animals, all of that is no longer a criminal offense in Bharatiya Nyaya Sanhita. So it's something like so something like that is happening and I have not seen a single men's rights activist talk about these issues, about the 377 not being in the, about Bharatiya Nyaya Sanhita not including these people or not including men in the gamut of sexual violence, etc. So I talked about how there are 1600 when that Atul Subhash incident happened and I said कि 1600, no, I said something else. The tweet was different. Oh yeah, women are gold diggers. Then this one is like, and women are gold diggers. That was an inverted comma. Women are gold diggers. With your 25,000 का ये नौकरी, call center का नौकरी, what gold digger? Like, do you have gold? You have gold. If you have gold, then somebody can be a gold digger. If you have a 10,000, 12,000 का call center का job, nobody is a gold digger. And specifically when you are exploiting the labor of women, you are accepting them कि वो घर उनका लेबर उनके लेबर से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा खाना बनता है, तुम्हारे कपड़े धुलते हैं, तुम्हारा सब कुछ होता है. You are the gold digger, no? You are the one who is looking for somebody who is you're exploiting their labor. Anyway, so these so-called there are a few people from the intellectual class that you talk about. They were like यार ये engagement के लिए तुम ये कर रहे हो, engagement के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो इस समय पे. Like 6 महीने में एक वीडियो बनाती हूँ मैं कभी-कभी. I give a rat's ass about engagement. It's not my prerogative at all. I don't care who is watching my videos. I don't care if nobody watches them. I make my videos to assuage my own survivor's guilt, to make sure that I am a participant, to make sure I am a soldier in a fight where probably we will be losing. We are losing currently. But I have to do it. So it's not my prerogative कि किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. तुम अपनी मेहनत खुद करो. तुम्हें समझाना मेरा काम नहीं है. तुम्हारी education is not my responsibility.
मेहनत करो. हाँ, तुम मेहनत करो. तुम मेहनत करो. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द इलेक्शंस ध्रुव के वीडियोस दिखाए जा रहे थे ना, वो टेम्पो में ले जाके ध्रुव के वीडियोस, एंड देयर वर अ फ्यू पीपल, द पीपल हु वर ऑर्गेनाइजिंग दैट वेर इन माय सर्कल ओनली, एंड मेरे वीडियोस कुछ उन लोगों ने दिखाए थे, बट दे वाले कि अरे तुमको ध्रुव जैसा लैंग्वेज सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज अदरवाइज पीपल वुड अंडरस्टैंड कि अरे ये तो क्या बोल रही है. जैसे महामहिम हम लोग, मैं जब भी नरेंद्र मोदी का नाम लेती हूँ तो आई यूज लाइक ऑल ऑफ दीज एपिथेट्स ना, सुप्रीम लीडर एंड ला 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 ला. सो पीपल एक्चुअली समटाइम्स दे थिंक अरे ये तो प्रो मोदी है. So anyway, that's the thing. I don't think the education of people is my responsibility. If it happens, good. If it, for example, sometimes when I make my anti-caste videos, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा conversation होता है, which I like, not argument, but conversation. When there is a scope of conversation, there is fine. When there is no scope of conversation, then I'm like, no. आप गलत बोल रही है. No, you are wrong. Go away. Yeah. And he does. He does. He's so much. उसको इतना ज़्यादा, मतलब मैं बोलती हूँ, तू कैसे कर लेता है, like कैसे एकदम एक एक लाइन कैसे समझाता है. मेरे बाड़ में जाए ब्लॉक करो, मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता है. उनका कोई को किसी को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर. We have the, I mean, such a nice legacy of Saraj Joshi or Parshai. They were the renowned satirists. Or Lakshman. परसाई आज जेल में डाल देते उसको, परसाई लिया तो रहता था, जिंदा रहता I'm था. asking कि why people are so, I mean, became aggressive when they hear, I mean, something like satire. तो satire के बाद why they feel so vulnerable or they think they comes to, I mean, वो मारने पे उतारू हो जाते हैं. इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अभी जो इलाहाबादिया वाला केस हुआ ना, उसमें उसके बाद से मुझे मैंने काफ़ी इस पे गहन चिंतन किया. कोई चिंतन नहीं किया, ऐसे समझ में आ गया मेरे को कि हमारे ना, there is this thing about, like for example, there is this line which I really like, जो feminist literature, I think it was bell hooks, I don't remember who it was. किसने बोला था? It's very famous actually, कि men are scared that women will laugh at them. Okay, men are scared of women because they think that women will laugh at them. Women are scared of men because they think that men will kill them. So the difference is, so laughing at someone is a power move. Okay, because हम लोगों ने महाभारत में भी देखा है कि दुर्योधन पे द्रौपदी हंसी थी. So laughter, specifically women's laughter, but then that's a different area altogether. But let's just talk about laughter. Laughter is extremely powerful. If you're able to laugh at someone, if you are able to laugh at something, it's very powerful. और इंडिया में क्या ना, इंडिया में जो हमारा समाज है, बहुत पावर के डायनामिक्स इतने सेट हैं, डायनामिक्स बहुत सेट है, लेकिन बहुत ही फ्रिवलस और अनफेयर ग्राउंड्स पे सेट है. फॉर एग्जाम्पल कास्ट का कोई लॉजिकल वजह नहीं है कि क्यों एक कास्ट पर्टिकुलर पावरफुल है डायनामिक्स में, हायरार्की में ऊपर क्यों है, दूसरा क्यों नीचे. एंड नाउ बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अदर, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पीपल लाइक Manjeet Sarkar and all, who is a comedian, stand-up comedian, who is doing a absolutely brilliant job. People who are talking about caste on social media, because of the democratization of speech, democratization of fame, जो social media की वजह से आया है, कि घर घर में हर किसी के पास, जिसके पास भी फोन है, वो उठाकर डांस करके गा के अपनी बात कह के, किसी भी जात का क्यों ना हो, बाहर निकल के वो भी फेमस हो सकता है. ठीक है. So these power structures which exist, which have been established on extremely flimsy and unfair grounds like caste, like patriarchy, like class, इनकी वजह से जो ये power structures established हुए ना, ये constantly question हो रहे हैं. And जितना कमज़ोर और जितना frivolous एक वजह होगा ऐसे power structure का, उतना वो ज़्यादा conscious रहता है, insecure रहता है कि कहीं मैं टूट ना जाऊँ. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जितना तुम इनसिक्योर हो, उतना ज्यादा तुमको चैलेंज फील होता है. कैसे बोल दिया मेरे को, कैसे ललकार कैसे दिया. तो जब अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राह्मणवाद, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन ब्राह्मण,
one guy, one Brahmin person. We're not talking about that. We're talking about Brahmanvad. Brahmanvadi विचारधारा उसमें so called जो lower caste से so called tendency वो वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है. पासी चमार के घर नहीं जाएगा, चमार पासी के घर नहीं, ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. It's the truth. So the more flimsy the ground for a patriarchal, or sorry, a ground for a power dynamic is, the more insecure it is, and the more insecure it is, the more you will be aware कि नहीं मेरे को कोई कुछ कहना दे, ठीक है. So our family structure, like especially in the case of Allahabadiya wala joke, our family structures are it's so patriarchal in nature, or patriarchy is based on this very idea on the women's sacrifice, है ना, the women's sacrifice being everything in patriarchy. तो उसमें based है, और उसकी वजह से जब उसको क्वेश्चन होता है ना कि तुम MC वाली गाली हर दूसरे वर्ड के साथ दे सकते हो, लेकिन इस बारे में बात ना करो, ठीक है. पुनीत पनिया का एक जोक है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कमरे के अंदर बीवी को चोक स्लैम मार सकते हो, लेकिन बाहर आके परिवार की बात करनी पड़ेगी तुमको, परिवार के उसके बारे में बात करनी पड़ेगी. सो दैट्स द थिंग. हमारे यहाँ बंद कमरे में कुछ होता है वो इट्स ऑल राइट. द मोमेंट यू टॉक एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इसीलिए इनसिक्योरिटी बढ़ रही है. और ये मेचिज्मो जो इन दिस आइडिया ऑफ मैचोइज्म एंड मेचिज्मो विच इज देयर इन ऑल दीज पावर स्ट्रक्चर्स, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग क्वेश्चनड, और इस क्वेश्चनिंग की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऑफेंड होते जा रहे हैं. हम लोग का जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा की तरह एक ऑफेंस वाला योजना भी शुरू करना चाहिए, भारतीय बुरा मानो योजना. एनीवे, सॉरी, बिल्कुल पावर स्ट्रक्चर्स तो हिपोक्रिटिकली होते हैं ना. आप अंदर कुछ और बोलोगे, क्या कहते हैं, और क्या औरतों की पूजा होती है, दुर्गा के रूप में पूछते हैं, बट लेकिन हर 16 मिनट में, हर 8 मिनट में एक रेप है. हाँ. Yeah. I talked about this and they were like, I wrote this on Twitter कि ये unnatural sex की वजह से मौत हो गई लड़की की, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो गया. But हाँ, let's talk about a joke. So and they were like, oh, both are wrong. Alimony and this both marital rape and alimony both are wrong. I'm like, भाड़ में जा यार. Block. ब्लॉक. तेरे दुनिया उसमें लाइफ में जो महिलाएं हैं उनके लिए मेरी संवेदना है, बंद करो. मेरे को मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो यूसीसी वाला जो उत्तराखंड वाला हो रहा है ना रजिस्टर, somebody said कि अगली बार ना लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है कि अभी सॉरी दिस माइट नॉट बी गुड फॉर कैमरा, आई टेल यू दिस जोक लेटर ऑन. I don't actually, but पता नहीं क्यों मैंने अभी रोक दिया अपने आप को. नेचुरली है मेरा जो भी है वो बहुत नेचुरली होता है दीदी. समटाइम्स इट्स नॉट ये या. Now, I had a question on your process. क्योंकि मतलब satire joke करना, एक तो ये हो गया कि हाँ एक social commentary है, but एक ये भी आपको कभी लगता है कि मैंने कुछ लिखा है, कहाँ है, अगर वो funny नहीं लगा लोगों को तो क्या? बाहर में जाए. तो आपको कभी ये नहीं feel होता कि No, I think I'm in a very very safe space that मतलब mentally regarding my work. मेंटली मैं परेशान होती हूँ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. समाज ने मेरी एकदम ब्रेन की हालत खराब कर रखी है. बट एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न, एक तो आई थिंक इट्स बिकॉज एक फालतू का कॉन्फिडेंस माँ बाबू जी ने बहुत भर दिया था बचपन में कि नहीं बहुत अच्छा करती हो बेटा, बहुत अच्छा करती हो तुम. जैसे होता नहीं, अंकल को ये करके दिखाओ, पोएम गा के दिखाओ, तो मैं बहुत खुशी खुशी करती थी. मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सब. तो कॉन्फिडेंस मेरे को बचपन से बहुत सारा है. तो मुझे वाकई में जब मैं लिखती हूँ ना कुछ, एक सेकेंड, लिखती हूँ कुछ भी, तो I don't know. I never think of it that way कि क्या अगर नहीं funny नहीं लगा तो. That's also the reason why I'm not really going into the stand-up comedy or stand-up वाला ये, because first of all हाँ थोड़ा कहीं पे डर तो लगता है कि क्या पता अगर नहीं हंसे तो, because performing in front of someone is a different ball game altogether than performing on camera. Plus also I have ADHD. And because of that reason 20 things are going on in my brain at the same time. So मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मैं स्टेज पे गई, I have prepared something, but I have thought of a brilliant joke right now
and it will not go with it, but I have this compulsion, मेरे को बोलना ही होगा, तो मैं उस टाइम में बोल दी, फिर मेरे केस, मेरा जो पूरा सेट है उसका एकदम खराब हो जाना है. So it's thankfully I have done this only twice. I have done the stand-up thingy only twice, and that also with Meghnad. And Meghnad was he was like encouraging enough for me. He is like मेरा एक buffer type का होता है ना कि कर तू कर ले. And also he gets so nervous that I am busy taking care of him, so I don't have time to get nervous. So वो भी हम लोग का एक सेट चलता है. Maybe next time if I do it, then it will happen. Otherwise, yeah. नहीं, कभी सोचा ही नहीं फनी लगेगा नहीं लगेगा, किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो अच्छा है, मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है. हाँ कोई हाँ. Do you ever think about whatever I'm talking about? I value the opinion of a very few people, and when they say something, then I take care of it. Like then I behave. For example, Meghnad is one of the people whose opinion I really care about. Then my husband usually finds everything I do good only. Everything I was going, बहुत बढ़िया. Sometimes he gets a little bit cautious, but otherwise, I think I myself, I'm my harshest critic. मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगा तो फिर नहीं अच्छा लगता, लेकिन अच्छा लगता है तो भैया इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कुछ. मैंने सबसे अच्छा लगा, सबसे बढ़िया लिखा है. But yeah, there's some people, for example, Ravish sir has commented. Ravish sir has like given me feedback a few times, which I have really taken to heart. And every time I remember, जब भी वो बोलते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं, even like my यूजुअल नॉर्मल पब्लिक कॉन्डक्ट किस तरीके से, बिकॉज मैं जैसी हूँ, मेरा फिल्टर नहीं है, और ADHD की वजह से ज़बान में भी 10 चीज़ें चलती रहती है, एक सेंटेंस ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, तो वो सब ये. बट आई डू थिंक अबाउट दीज ये criticism I don't really like. I'm sorry, but तो मुझे वो खराब लेने लग जाता है कि कोई क्रिटिसाइज करता है तो. बट आई डोंट नो, I think वही ना फीडबैक लूप है. देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल जिसका मैं सुनती हूँ और वो मुझे बोल देते हैं, फिर वो डायरेक्टली बोलते हैं, ऐसा नहीं है. और देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, पुरुषोत्तम ऑल्सो. ही ऑल्सो समटाइम्स सेज, व्हेन ही सेज कि तेरा ये वाला वीडियो अच्छा था, तो हम लाइक अच्छा बढ़िया है. देयर आर अ फ्यू पीपल इन माई लाइफ टू हुम आई लिसन टू. इंटरनेट वालों की मैं बात नहीं सुनती. आपको प्रेशर फील होता है, मतलब क्योंकि आप परफॉर्म करती हैं and it matters a lot of time what you say has impact. So do you feel that pressure the next time I write it has to land because I am trying to put out a voice out there? See, the thing is, like I said, I am my own harshest critic. उसी तरह से मेरा सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर अपना ही रहता है. And but then I don't work well under other people's pressure. For example, I tried doing my Dugdarshan with a few news organizations, websites and all. Like पहले मैंने Wire के साथ करने की कोशिश की थी. Then I did it with Politics, then I did it with 4 PM. So all of these उनके साथ मैंने करने की कोशिश की. But then the thing is, the moment this टाइम लिमिट कम्स ना कि एक हफ्ते में आपको देना, एक हफ्ते में एक वीडियो करना है, एक हफ्ते में वो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाता. मेरा कि मेरे को जब मन करेगा मैं तब बनाएगी, नहीं मन करेगा नहीं बनाएगी. जैसे पिछले 6 महीने से नहीं बनाया तो नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता. सब्सक्राइबर्स कम हो रहा है, फॉलोअर्स कम हो रहा है, पैसा मोनेटाइजेशन तो चलो है ही नहीं, ट्विटर का भी मोनेटाइजेशन खत्म, इंस्टा का भी खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए. जब मुझको मन करेगा मैं तब बना. तो ये प्रेशर, I don't work very well under pressure which comes from external sources. मैं अपने आप पे जितना प्रेशर डालती हूँ ना उतना बहुत है मेरे भाई. अरे बाप रे, खुद ही पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया दे देती हूँ तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है. Yes, I think we'll stop it here. Yes, thank you. Yes. I'm like tired standing. Absolutely. And then But thank you so much. Like I said, thank you. 2 लोग भी होता तब भी मैं इतना ही बोलती. Absolutely. So thank you so much, Medusa, for coming all the way. Thank you and so much. spending Thank you. time And with this us. very short time में आपने organize किया. And thank you Laltu sir for introducing me to Lama Khan. Thank you. And thank you everybody for your time and patience. Have a Thank good you. night. Thank you guys. Thank you very much.